क्रिकेट इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल गेम, अनिश्चितताओं का गेम है क्रिकेट। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है, वो भी 2020 वर्ल्ड कप में? तो भाई ऐसा हुआ है, आयरलैंड को जीत मिली है इंग्लैंड के खिलाफ 5 रन से बाय डीएलएस मेथड। लेकिन ये जो जीत मिली है वो सिर्फ बारिश के चलते नहीं मिली है। आयरलैंड ने आज बहुत अच्छी क्रिकेट दिखाई। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रन बोर्ड पर लगाए, जिसमें बाल बर्नी ने 62 रन की पारी खेली 47 गेंदों में। इसके अलावा लॉकन टकर ने 34 रन बनाए, कर्टिस कैम्पर ने 18 रन बनाए, लियम लिविंगस्टोन को 3 विकेट्स मिले, मार्क वुड को भी 3 विकेट्स और सैम करन को 2 विकेट्स मिले। लेकिन उसके जवाब में इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ और सिर्फ डेविड मलान चले। 35 रन उन्होंने बनाए, मोइन अली क्रीज पर थे, 24 नॉट आउट, और हैरी ब्रुक ने जो है वो 18 रनों की पारी खेली। इसके अलावा जॉश लिटल को 2 विकेट्स मिले आयरलैंड की तरफ से, जॉर्ज डॉक्टरल को 1 विकेट मिला और फियरहैंड को भी 1 विकेट प्राप्त हुआ और आयरलैंड को जीत मिली है। ये बहुत बड़ा अपसेट है। आप देख रहे हैं बैड ब्रिक्स प्रेजेंट रन की रणनीति, और मेरे साथ 2 खास मेहमान क्रिकट्रैकर पे इस वक्त मौजूद है, असगर अफगान एंड आई हैव विद मी स्टुअर्ट लॉ। वेलकम जेंटलमैन। असगर भाई, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्या ऐसे अपसेट की आपने उम्मीद करी थी? देखो, एक बात है, अगर आप क्रिकेट की हिस्ट्री देखो, स्पेशली आयरलैंड और इंग्लैंड की, जब ये लोग आपस में मैचेस होते हैं तो बहुत टफ मैचेस देखने को मिलते हैं। ये एक मैं देख रहा हूँ, जितने भी ये नाइबर्स कंट्री है, जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो गया, आयरलैंड इंग्लैंड हो गया, अफगानिस्तान पाकिस्तान हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, इसके जब भी आपस में मैच हो तो मैच बहुत टफ मैचेस होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उस पर कि ये मैच हम जीत जाए। तो ये मेरे ख्याल में क्रिकेट में हमें ये चीज़ बार बार देखने को मिली है। और हमें स्पेशली आयरलैंड, जब भी हमने इंग्लैंड के खिलाफ देखे, उसने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। जितने भी T20 मैच हो या 50 ओवर मैच है, वो मैच सारे पूरे मैचेस हुए, टफ टाइम दिए आयरलैंड के। मुझे पता है, मैं काफ़ी क्रिकेट आयरलैंड के साथ खेल चुका हूँ। आयरलैंड अगेंस्ट फास्ट बॉलर अच्छा खेलते हैं, उसका जब बॉल थोड़ा घूमता है, उसकी मीडियम पेसर भी जो बॉलिंग करते हैं, तो वो डिसिप्लिन, फिर उसको खेलना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में ये कंडीशन आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों को सूट कर रहा था और जबरदस्त क्रिकेट खेली आयरलैंड और हमेशा खेलती आ रही है अगेंस्ट इंग्लैंड। बिल्कुल। And Stuart, we were discussing this before the match started that England is coming into this match with the tag of being favorites, but we never actually expected this kind of, actually an excellent game of cricket by Ireland. And of course, when we talk about Ireland, maybe they came with this preconceived notion that we have to go after this team, and England is the team in this tournament also. We have seen Ireland beating West Indies. West Indies is out of the tournament, and now they were against England, and they fought it like warriors. Yeah, they did. Mark Wood, I watched the the halfway interviews, and Mark Wood said that England weren't, up for the contest in the first 10 overs. They were way off the mark. They didn't bowl particularly well in those first 10 overs, and Ireland made them pay. Andy Bell-Burney, he's played a lot of county cricket. He's played a lot of cricket in these types of tournaments, in the associate tournaments. And he's not a bad player at all. Paul Sterling got them off to a bit of a fly. He lost his wicket early, but he got the momentum going, and then Bell-Burney and Lorcan Tucker just started playing some great cricket shots, put together a really good partnership, and that set up the total of 160. So we did say at the top of the order, it's not going to be easy. The bigger grounds, you can't just stand there and clear the boundary. You've got to actually play with your head more than your power. And Ireland did that really well. England got stuck in a bit of a hole, but you can't take any credit away from Ireland. I thought they batted very well in the first 10 overs, and when they came out and bowled, they bowled exceptionally well. Josh Little was brilliant with the big wicket of Joss Butler in the second ball of the game, the innings. That was probably the turning point right there.
Yeah, and of course we have to talk about Belbirni. असगर भाई, बेलबर्नी जिस तरह की बल्लेबाजी आज उन्होंने की है, जो स्टार्ट दिलाया आयरलैंड को कि वो 157 रन तक पहुंच सके, बहुत बड़ा योगदान उनका। बेलबर्नी की बैटिंग अगर आपको दिखाए तो 47 गेंदों में 62 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के, 131 के स्ट्राइक रेट के साथ। 47 गेंदों में 62 रन बनाना, भले ही इकोनॉमी बहुत ज्यादा नहीं हो, स्ट्राइक रेट भले ही बहुत ज्यादा नहीं हो, लेकिन फिर भी वहां पर टिके रहना और 157 तक अपनी टीम को लेके जाना, अपनी टीम को ये कॉन्फिडेंस देना कि हम एक बड़ी टीम के अगेंस्ट जीत सकते हैं। देखिए कि कैप्टन का यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि जब बड़ा मैच होता है उसको चाहिए कि वो लंबा क्रिकेट खेले। और जितने मैंने बालबर्नी को देखा है, वो स्पेशली फास्ट विकेट पे अच्छा क्रिकेट खेलता है, वो बैकफुट प्लेयर है और उसने आज शो किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी ली जा सकती है। तो ये होता है जब आपको पता होता है कि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी आप आजकल आप मैचेस देख रहे हो, 150 प्लस रन चेस करना बहुत टफ होता है। मैचेस बहुत लंबे जाते हैं। अच्छा, ये मैच तो बारिश की वजह से आयरलैंड जीत गई, शायद आयरलैंड हार भी जाती, मगर ये क्रिकेट है। मगर हम आयरलैंड के क्रिकेट को देखेंगे, उसने बहुत आज 157 इज अ बिग टोटल, बहुत जबरदस्त टोटल है अगेंस्ट इंग्लैंड की बॉलिंग के। उन लोगों ने जबरदस्त क्रिकेट, और स्पेशली बालबर्न ने जो आज क्रिकेट के लिए, मैंने उसको काफी टाइम के बाद उसकी फॉर्म देखी, जिसने स्पेशली आज जिस तरह उसने बैटिंग की है, उसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने जो सिंगल डबल किए, जो उसने गैप्स मारे, तो मेरे ख्याल में यही होना चाहिए। एक कैप्टन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस तरह बड़े मैचेस में वो एंड तक जाए। जब आप एंड तक जाओगे तो ऑटोमेटिकली रन बोर्ड पर आते रहेंगे, क्योंकि जब आप सेट होंगे तभी आप रन कर पाएंगे। तो आज मेरे ख्याल में बालबर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसने शो किया है कि बड़े टीमों के खिलाफ किस तरह खेलना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी लेनी चाहिए। बिल्कुल। Stuart, what do you think about Belbirni? His batting, 62 runs, and he gave team the confidence that yes, we are going to win this match, and they did. And it's not only because of the rain, it's not because of the DLS that they won the match. They played good cricket and they deserve to win today. Oh, exactly, and as Ashkar mentioned, he's captain as well, so he wants to lead from the front. He wanted to put pressure on England. They didn't win the toss, but I'm pretty sure they would have been happy losing the toss and batting first to at least put a score on the board. Scoreboard pressure is one thing that you can't take out of the game. It's always there, particularly when you're chasing down a total. Ireland had to start well. Andy Belbirni, as I said before, put together a good partnership to start the innings with Paul Sterling, and then with Lorcan Tucker, just found a really good rhythm, good momentum. They were hitting boundaries. They were hitting boundaries on both sides of the wicket. So, in effect, England's bowling probably not quite as where they should have been. But Belbirni took full toll, and I thought his leadership and his captaincy during this brief bowling innings as well. He messed his bowlers around and mixed them around. Great decision to bring George Dockrell in. He hasn't bowled a lot recently in recent times, but bowled only one over, had 2 catches dropped, took a wicket, and finished his spell with 1 for 5. So, just to have the presence of mind to throw the ball to someone who hasn't been bowling a lot recently. And to give them that confidence to have success, and he went out and did really well for his team. So credit to Ireland and Andy Belbirni, well led. असगर भाई, अभी फिलहाल चलिए आयरलैंड ने तो टीम ये मैच जीत लिया, बहुत बड़ी जीत रही उनके लिए, लेकिन इंग्लैंड अभी क्या सोच रहा होगा कि वो आयरलैंड से हार गए, और उनको भी शायद ये पता होगा जहन में कि आयरलैंड ने आज अच्छी क्रिकेट खेली है, इसलिए हम आ रहे हैं, बारिश की वजह से नहीं। इंग्लैंड का मनोबल कैसा होगा अभी? इंग्लैंड बहुत अपसेट होगा, क्योंकि इंग्लैंड एक बेस्ट टीम है इस वर्ल्ड कप में। अब उसकी बॉलिंग कम्बिनेशन देखो कि बैटिंग कम्बिनेशन उसकी ज़बरदस्त है, और काफ़ी टीम उसकी बहुत फॉर्म में भी चल रही है उसकी टीम। तो मेरे ख्याल में बहुत अपसेट होंगे, स्पेशली अगेंस्ट आयरलैंड जब हारते हो, जब आप नेबर कंट्री से हारते हो, टफ मैच भी होता है, तो बहुत बुरा लगता है। तो मेरे ख्याल में आयरलैंड के मोराल इस मैच से थोड़ा वीक नीचे गिर भी आ गया होगा, क्योंकि आयरलैंड अगेंस्ट इंग्लैंड के लोगों को समझने कितनी अच्छी टीम है, मगर ये कि जब भी आप किसी टीम को रिलैक्स लोगे तो आपको इस तरह हालात का सामना करना पड़ेगा। इंग्लैंड का इस टाइम ये मोराल है वो बहुत लो होगा, क्योंकि उसके साथ अपॉर्चुनिटी थी आयरलैंड को बीट करने में, क्योंकि वो एक मैच ऑलरेडी जीते हुए थे अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो मेरे ख्याल में ये उन लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्या अगर आज ये लोग मैच जीत जाते और तीसरा श्रीलंका से भी जीत जाते तो इन लोगों को आसानी से ईजी चांस है सेमीफाइनल के लिए। अब इंग्लैंड के लिए टाइम टफ हो गया है, जो क्योंकि अब इन लोगों ने सारे मैच जीतने,
तो मेरे ख्याल में प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा इंग्लैंड पे अभी। बिल्कुल। और यहाँ पर हमें उनकी बॉलिंग की बात करनी होगी। जॉश लिटल स्पेशली 2 विकेट्स उन्होंने अपने नाम किए और 16 रन दिए 5.33 की इकोनॉमी के साथ। यहाँ पर अज़हर भाई, अच्छी गेंदबाजी जॉश लिटल द्वारा। ज़बरदस्त बॉलिंग की है, डिसिप्लिन बॉलिंग की है, बॉल स्विंग हो रहा था, आगे बॉलिंग की, स्विंग के लिए बॉल छोड़ रहा था, तो इसी वजह से मेरे ख्याल में उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली, विकेट भी ले दिए। उसका लाइन ज़बरदस्त था। बिल्कुल। अभी फिलहाल स्टुअर्ट, talking about the next match, now this match is done and of course England will be very upset after this match and they'll have to shake things up because they lost against a team like Ireland. And let's see, because they have more matches coming up and with the bigger teams in the tournament, with the tougher teams. The next match that we have to talk about is of course Afghanistan versus New Zealand. न्यूजीलैंड जो है अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और अफगानिस्तान पिछला मैच इंग्लैंड से हार गई थी। बट इफ the toss has been delayed because it has started raining again at the MCG. But talking about New Zealand, they are in the strongest position right now with the net run rate of plus 4.45. And before their match against Australia, many were not even calling New Zealand favorites, but now they have proved people wrong. So the momentum is with them, Stuart. Yeah, it's hard not to go, for New Zealand. I don't understand why people weren't really talking about them, because the 50 over World Cup, they featured in the final in England, and the recent T20 World Cup in the UAE, they featured in the final against Australia. So, New Zealand have got pedigree. They're not easy beats, that's for sure. You've got to. They can account for any team in the world when they're playing at their best. And against the Australians the other day, they had plans against the Australian fast bowlers that worked by moving down the wicket, getting closer to the pitch of the ball, and negating the pace and bounce of the Australians. And Finn Allen, exploited that beautifully. Devon Conway just sat back and played the way he normally plays, and finished with the credit of 92 not out. But they're a formidable team. They've got great batting. They've got good power hitting in the middle order with Jimmy Neesham in that middle order, and they've got fantastic fast bowling. You've got one of the greatest going around, Trent Boult, Tim Southey, and Lockie Ferguson, one of the fastest bowlers in world cricket at the moment. They've got Mitch Santner who does the spin roll. They're pretty well versed in all formats of the game, and these guys play a lot of the same. Or the same team plays basically almost every format, so they're very close. They're brothers. Having been involved in games against them, you can see the togetherness that they have. Whether the boys that are playing on the ground or they're playing off the ground, they love playing for each other. That's a dangerous team. New Zealand, they deserve the credit when they get it, because they actually play in the right spirit. They actually play very good cricket. They're always competitive. But they're also humble, so it's a nice mix. They're sitting pretty at the top of the table now, and all they have to do now is just keep winning. If they keep winning, well, they're going to make it through easy. असगर भाई, पिछला मैच अफगानिस्तान ने भी देखा होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और न्यूजीलैंड ने किस तरीके से वो मैच जीता, बड़ा मैच जीता। अफगानिस्तान की कैसे तैयारी होगी आज के मैच के लिए? सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी मिससाउंड हो गई। अफगानिस्तान की तैयारी कैसी होगी आज के मैच के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड बड़ा मुकाबला जीत कर आ रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? नो डाउट, न्यूजीलैंड ने लास्ट मैच जो जीता ऑस्ट्रेलिया से, बहुत जबरदस्त मैच जीता। न्यूजीलैंड का कॉन्फिडेंस काफी हाई होगा। देखो, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का लास्ट वर्ल्ड कप में मैच हुआ था, तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को पता होगा कि लास्ट जो अबू धाबी में जो मैच था वो विकेट स्लो भी थी। वहाँ पे न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को टारगेट किया था पीछे बॉल पे, तो यहाँ तो लाजमन करेगी। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के काफ़ी टाइम नहीं होगा एक लास्ट मैच खेलने में, तकरीबन 8, 9, 10 महीने हो गए होंगे। उसको एक्सपीरियंस होगा कि ये न्यूजीलैंड हमारे खिलाफ कैसी बॉलिंग टारगेट करेंगे, हमारे खिलाफ कैसी खेलेगी। तो मेरे ख्याल में उसके लिए उन लोगों ने 3-4 दिन प्रिपरेशन भी की होगी और मेंटली रेडी भी होंगे उनके खिलाफ, क्योंकि न्यूजीलैंड का जिस तरह मुझे लग रहा है, अगर अफगानिस्तान आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी तो न्यूजीलैंड उस पर अटैक करेगी, स्पेशली बॉलिंग में अगेंस्ट अफगानिस्तान। उसको थोड़ा पीछे बॉलिंग डालेंगी, उसको एक आधा बॉल आगे डालेगा उसको। तो अफगानिस्तान को ये उस पर सोचना चाहिए, उस पर काम भी मेरे ख्याल काफ़ी किया होगा, उसके साथ कोशिश भी है।
तो यही होगा, उसके इसके डिफेंड करना होगा इस चीज़ को। जब तक हम डिफेंड नहीं करेंगे तो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तो इंशाल्लाह होप अफगानिस्तान आज अच्छा करेगी। बिल्कुल, चलिए आपको हेड टू हेड दिखा देते हैं न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच 2020 वर्ल्ड कप में एक ही मुकाबला हुआ है और वो मुकाबला न्यूजीलैंड ने जीता है अफगानिस्तान के खिलाफ। ये आंकड़े क्या मदद करते हैं असगर भाई मैच से पहले? देखो, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड ने काफ़ी क्रिकेट नहीं खेली है। हमारे स्पेशली हमारे खिलाफ उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, मगर लोगों ने मैचेस देखे काफ़ी हमारे टीवी पे। आजकल तो सारे मैचेस लाइव होते हैं, तो न्यूजीलैंड को देखने वाला एक्सपीरियंस होगा, मगर खेलने वाला एक्सपीरियंस इतना नहीं होगा। क्यों, जिस तरह हमारे बॉलर्स है स्पेशली न्यूजीलैंड के बहुत से प्लेयर्स नहीं खेलेंगे उसके इतना ज़्यादा, तो दिक्कत का सामना करने में हमारे लिए ये प्लस पॉइंट होगी, क्योंकि हम तो वैसे भी बड़े मैचेस नहीं खेलते। अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमने वैसे भी नहीं खेला है, तो न्यूजीलैंड को थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा हमारे बॉलिंग के खिलाफ, और हमारे बैट्समैन को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना है उसके बॉलर के खिलाफ, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने बैट्समैन ने नहीं खेला है न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये मेरे ख्याल में ये 50-50 होगा दोनों की तरफ से। बिल्कुल 50-50 तो हो गई। एंड ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान एंड देयर क्रिकेट, the kind of cricket that they play, the kind of bowlers that Afghanistan has produced. Can you tell us more about how the world of cricket talks about Afghan and its rise? Yeah, look, there's nothing but praise for Afghanistan cricket. The way that they do play the game. I remember sitting in a studio in Manchester during the last T20 World Cup, and I fell in love with the way they played the game. The batsmen come out and they just play shots. Doesn't matter the situation of the game. They're fearless. They come out and they play their shots. They try and take the game on to the opposition. Strategic plan. They like batting first. They like putting a score on the board. And they like being able to squeeze and put pressure on the opposition with their three world-class spinners. Rashid Khan's one of the best going around in world cricket. In all the franchise tournaments, every team wants to pick him first. So that's a credit to him. Mujeeb's also been around the traps playing a lot of franchise cricket, but they do an exceptional job for Afghanistan as well. And Mohammad Nabi is one of the best all-rounders in world cricket. Still he's been around for a while now, but he's still producing the goods on the big stage. So look, the batters at the top, Gurbaz and Zazay, if they can get them off to a good start, the middle order can capitalise on that. They've got power as well. Nabi comes in at the back end of an innings, and he's a little left-hander, but he can clear boundary ropes for fun. And so once again, they've got pretty well all bases covered. Good seam attack, young seam attack, but a good seam attack, and they've got world-class players in their team. So they just need the batsmen to really fire. I think for Afghanistan to go through and continue to win, they just need batsmen to put 150 plus on the board all the time. If they can do that, they're going to win a lot more games. लेकिन असगर भाई, अफगानिस्तान के बैटर्स को भी अपना गेम अप करना पड़ेगा, पेस के खिलाफ उन्हें अच्छा प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा, और अफगानिस्तान के पेसर्स को भी अपना गेम अप करने की जरूरत है। आज आपको क्या लगता है, कौन ऐसा खिलाड़ी हो सकता है जो गेम चेंज कर सकता है? देख, पहले तो ये बात है कि मैं एक बात कहना चाहूँगा। पहले तो एक बात है कि जब भी आपकी एक सेट बैट्समैन विकेट पे खड़ा होता है और दूसरा नया बैट्समैन विकेट पे आता है, तो उसको चाहिए जो सेट बैट्समैन नए बैट्समैन को बताना चाहिए कि बॉल इस तरह आ रहा है, हमें ये चीज़ नहीं मारनी चाहिए। मेरे ख्याल में लास्ट मैच में मुझे ये चीज़ अफगानिस्तान से मुझे नहीं मिली देखने को, कि आपस में डिस्कशन करें कि बॉल बाउंस हो रहा है, हमने पुल नहीं मारनी, बस हमने लिफ्ट करना है। क्योंकि अगर आप लास्ट मैच में हमारा देख लो, हमारा 15 ओवर्स में 89 रन थे और 4 आउट थे। तो लास्ट 6 ओवर में हमने 23 रन बनाए हैं, 23 और हमने 6 विकेट दी है। तो ये एक चीज़ होता है, हमें उस चीज़ सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उस तरह ना करे, उसे बेहतर करे। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान ने काफ़ी प्लानिंग भी की होगी अगेंस्ट न्यूजीलैंड के बॉलिंग के खिलाफ, और उसको थोड़ा स्पेशली मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे ज़रा बैट्समैन देख लो, स्पेशली जैसे रमान गुरबाज हो गया, यंगस्टर है मगर काफ़ी क्रिकेट उसने खेल लिए, इस लास्ट वर्ल्ड कप भी खेला है, एशिया कप भी खेला है, काफ़ी उसका एक्सपीरियंस है। नबी है, नजीब है, इन तीनों प्लेयरों को चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आज और टीम के लिए करे, क्योंकि जब तक आपके सीनियर प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे टीम के लिए, तो टीम को दिक्कत का सामना कर रहा है। इन तीनों प्लेयरों को आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि थोड़ा लंबा, अगर आज मैच होता है, बारिश नहीं होती है मैच, जब तक हम ये 3 प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, थोड़ा परफॉर्म नहीं करते,
तो हमें थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जब तक हम जैसे स्टीवर्ट ने बोला है कि 150 प्लस रन बनाएंगे तो अगेंस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी जिस तरह बॉलिंग है, अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किलात होगा न्यूजीलैंड को चेस करने में, क्योंकि जिस तरह हमारी बॉलिंग है, जिस तरह हमारी फास्ट बॉलिंग आजकल जो फार्म फजाला की चल रही है, तो डिफिकल्ट होगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा आज इस 3 प्लेयर को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उसको अच्छा खेलना चाहिए। बिल्कुल। और अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा उम्मीद भी है उनके खिलाड़ियों से, क्योंकि अभी जो लाइव विजुअल्स आ रहे थे ना असगर भाई कि अभी कवर्स तो है ही, लेकिन राशिद खान जो है ना ऑटोग्राफ्स दे रहे हैं वहां पर। काफी सारे अफगान फैंस भी आए हैं मैच देखने के लिए। तो देश में तो है ही, लेकिन वहां पर पहुंच के अपनी टीम को सपोर्ट भी कर रहे हैं और बहुत उम्मीद है अफगानिस्तान को अपनी टीम से। जी, जितने भी अफगानिस्तान के लोग जिधर भी है वो क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं और अपने प्लेयर से बहुत प्यार करते हैं और उसको सपोर्ट के लिए बहुत दूर-दूर से आते हैं। मुझे पता है कि इस वर्ल्ड कप के ऑस्ट्रेलिया बहुत से लोग अफगानिस्तान से गए, बहुत से लोग अमेरिका से आए हुए हैं, इंग्लैंड से गए हुए हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। ये बहुत प्लस पॉइंट है अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए, अफगानिस्तान टीम प्लेयर्स के लिए। तो हमेशा अफगानिस्तान फैंस ने अफगानिस्तान प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्रिकेट को बहुत सपोर्ट किया है, ये हमेशा होता रहा है। बहुत प्यार करते हैं अपने क्रिकेट से। और ये एक चीज़ होती है कि अफगानिस्तान के प्लेयर बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती है, चाहती है कि वो अच्छा क्रिकेट खेले कि उसके फैन मायूस ना हो। Lot of expectations from Afghanistan. And Stuart, you know, Afghanistan have made progress in T20 cricket. They have produced phenomenal bowlers like Rashid Khan and their players like Mohammad Nabi. But how far do you see them going into this tournament? Well, as I just said, you know, if they can find a way to score 150 plus, you know, they can go a long way. You know, with as long as their trio of, you know, spinners stay fit and healthy, they've got a fantastic opportunity. I think the bigger grounds in Australia suit the spinners, particularly the class spinners. As the tournament progresses, there'll be a bit more. Well, the rain goes away as well. If the pitches dry out a bit, there'll be a little bit more help for them as well, which will make them even more difficult to bat against. So, you know, if they can just piece together scores of 150 plus, you know, that will go a long way to helping them get through a long way in this tournament. You know, and as Afghan says as well, you know, we got to sit down and realise that the players there that have been there for a while now, it's their responsibility to make sure that they grab this opportunity to put those runs on the board for their team to bowl at. If they're chasing down a total, you know, the totals won't be great. They shouldn't be 200. They should be, you know, manageable around the 140, 150. If they can manage to score those runs, you know, they can go a long way. But which team do you think is the most promising team of this World Cup? Well, it's early days yet. You know, there's teams. You know, South Africa, you know, got done by the weather the other night, and they seem to be well on track to win that game, a real shortened game. But you haven't really seen them play the full game at this stage. But too early to call on them. You know, India, Pakistan are always going to be there and thereabouts. They're very good in these tournaments. You know, they've got, you know, so many wonderful cricketers, you know, that you can't discount them out of any major tournament. Australia are going to struggle, I think. You know, if they just slip up one more time, they've got a couple of, you know, banana skins coming up. And England now, if they you know, miss out on one more, that Australia-England game is an absolute, you know, crucial contest now. Miss out twice, I think you basically pack your bags and go home. So, you know, you can't really say one team at the moment, but for me at the moment, you know, I was picking England before the tournament started. And there you go, Ireland have just Australia, yeah. Well, in Australia, yeah, I was picking England. They seem to be, you know, more together. They'd been, you know, playing together for a while. Their order seemed settled, injury free, so they're looking pretty good. So yeah, don't believe everything I say. You know, with that, you know, the best team at the moment, you got to go on that run chase the other night. India just looked like, you know, that they'll gain so much confidence from that win. You know, it'll be tough to hold them back, I reckon, from now. असगर भाई आपसे भी यही सवाल पूछूंगी मैं, कौन सी टीम आपको लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है, कौन जीत सकता है इस बार 2020 वर्ल्ड कप? मेरा तो ये एक बात बताना चाहूँगा कि मुझे तो फाइनल में, सेमीफाइनल में वही 4 टीमें दिखेगी कि अब भी मैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ हूँ।
सेकंड हैंड से अच्छा। मैं इंडिया और पाकिस्तान के साथ दो टीम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है। अब भी है मेरा ये दोनों टीम है, क्योंकि आज आयरलैंड इंग्लैंड आज हार भी गई है, मगर इंग्लैंड की टीम का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, वो उठेगी वापस। आयरलैंड की टीम में बुरी नहीं है कि आज वो मैच हारे कि इंग्लैंड बुरा टीम है, नहीं नहीं, ये गलत है। इंग्लैंड एक अच्छी टीम है, और दूसरे ग्रुप से मुझे वही टीम दिखेगी, इंडिया और पाकिस्तान। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, अगर दूसरे राउंड से मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का चांस बहुत ज़्यादा है कि वो फाइनल में चले जाए, और सेमीफाइनल, और इंडिया का चांस भी बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में इन दोनों का मैच आखिर में फिर होगा, मगर वहाँ पे जो मैं एक बात बताना चाहूँगा, वहाँ मुझे पाकिस्तान भारी लग सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो लास्ट मैच खेला है, जिस तरह उसकी बॉलिंग है, जिस तरह इंडिया ने वो मैच जीता है, वो कोहली नहीं जीता है। अगर पाकिस्तान और इंडिया का जितने भी मैचेस हुए, वो कोहली नहीं जीता है पाकिस्तान से। जब भी कोहली जाएगा तो मसले में पड़ जाएगी इंडिया। तो मेरे ख्याल में ये दो टीमें, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों टीमें फाइनल भी खेलेगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो सकता है, और पाकिस्तान का परिणाम हो सकता है कि उस मैच में भारी हो, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। भले ही हमें विराट कोहली ने वो मैच जिताया, लेकिन पाकिस्तान को हम कम नहीं आंक सकते हैं। आपकी भी क्या राय है? आपको क्या लगता है फाइनल कौन मैच में कौन जाएगा, या फिर सेमीफाइनल की वो 4 टीम्स कौन सी हो सकती है? आप हमें जरूर बताइए, हैशटैग यूज कीजिए, बैडब्रिक7 CricTracker को मेंशन कीजिए सोशल मीडिया पर, और हम आपके सवाल, आपके कमेंट्स यहाँ पर लेंगे। और अब बारी है आपके सवालों की और आपके कमेंट्स की ही हमारे सेगमेंट सोशल ट्रैकर प्रेजेंटेड बाय बैडब्रिक7। ओके, तो सोशल ट्रैकर में हम आपको दिखाते हैं। एलन विल्किंस कह रहे हैं, कुड क्रिकेट आयरलैंड pull it off against England cricket today in the T20 World Cup? This is a tournament of upsets. ये तो बिल्कुल सही बात है। इस टूर्नामेंट में we can see so many upsets till now. You know, the first match between Australia and England in the Super 12, where Australia and New Zealand won the match, though Australia entered that match as favorites. So can we expect more upsets in the tournament? Oh yeah, the way it's going, definitely. I think that the nations that are going into each contest who are rated the underdogs will gain confidence from those two victories, particularly today the Irish beating the English. So yes, definitely, I think there will be there'll be another couple of twists, I think, in this tournament. The big boys won't have it all their own way. They're going to have to play cricket, play their best cricket all the time, and that's what you expect in a World Cup too. You want the team that goes through to win it to be the best team, and the best team for a reason to go through playing the best, day in, day out. So it's going to be tough. But as I say, the lesser fancied nations will gain a lot of confidence out of what happened today, and hopefully that gives the actual World Cup a real spice and something to look forward to watching. Okay, so let's have a look at the next tweet now. Virendra Sehwag is saying, gone are the days when one used to think that the Western countries offer so good hospitality. India are way ahead of most Western countries when it comes to providing hospitality of the highest standards. Actually, there's an incident that happened, and India was supposed to go for their practice session, but it was 42 kilometers away. And of course, also in one of the practice sessions, they were served cold sandwiches as lunch. Stuart, do you also agree that, all the countries have gathered in Australia, and the standard of cricket has risen so much, but then you're still serving your cricketers who are achievers cold sandwiches? Why don't you think that Australia should actually this is not the way to host a World Cup? Well, it's traditional. It's part of our culture. We grew up on cold sandwiches at lunchtime, and fresh fruit and what have you. So, I think if that's the biggest problem that is encountering Virendra Sehwag at the moment, I think the world's in a pretty good place. I think he's also talking about the hospitality, because in India, we really take care of all the nations that come here as hosts. It's not about only serving cold sandwiches, but it's also about, hospitality. And if the practice sessions, if it's 42 kilometers away, then the team has to go all the way for the practice session. So, collectively, if we talk about hospitality of Australia, obviously they're doing a fabulous job. We're not taking anything away from them, but somewhere the standard needs to match up.
Oh, look, I love the hosting of the subcontinent, not just India, but everywhere you go. I'm in Bangladesh now, and they're wonderful hosts. I get where you're coming from. Yes, it probably does pale into insignificance. When you come to India, when you go to even Pakistan now, when you go to Bangladesh, when you go to Sri Lanka, you are looked after like royalty. That's how the players are perceived in those nations. In Australia, not quite the same adulation towards a cricketer as it is to a cricketer in, say, India or Pakistan. So we're not treated as, the royalty that you are, or the Indian and the subcontinent boys are used to in their own country. So not taking anything away from, the way that we're treated in Australia. That's just how it is. To travel 42 kilometres, no, I wouldn't be going to practice either. That's only 42 kilometres there. You've got to get home as well. So to travel 2 hours each way to get to practice for, an hour and a half, 3 hours, it doesn't seem worth it either. But, that's unfortunately with having so many nations in the one place, cricket grounds, if you want the best facilities, sometimes you've got to go out of the ordinary. And I know New South Wales have built a practice facility like they have in Brisbane. Brisbane's practice facility at Allan Border Field is only 15 minutes from the Gabba, so it's not too far, 15 minutes from town, so it's not too far away to travel on the outer side. But Sydney's a different bag altogether, because you could travel 3 hours and you're still in Sydney. You travel 3 hours, you're in far north Queensland, so it's slightly different. I wouldn't be travelling 42 kilometres either, but if India, decide to, I don't think missing one training session is going to affect their preparation. They know how to play the game. They'll get there the day before the game or the day of the game. They'll do what they need to do and they'll be ready to go. If Sehwag has, his thoughts, I agree wholeheartedly. But you've also got to understand that, as I said before, we love the cold chicken sandwich. That was perfect for lunch for us. I love cold sandwiches, so nothing, not taking anything away. But it's personal preference. But the whole package that you guys give is amazing in India. Okay, so Tabrez Shamsi, he commented on a tweet saying, comment a batsman who better than Virat Kohli in current cricket eras, and he said, Yuzvendra Chahal. Oh, maybe he's just having a good laugh. And of course, Yuzvendra Chahal also replied to him saying, still better than you, bro. Tabrez Shamsi said, not only me, you're the best of our era, bro. And to which Yuzi said, still I don't wear chest guard while facing spinners like you, bro. And then Tabrez Shamsi said, bro, Bumrah was going to come from the other end. No ways, I'm taking a chance with that. Also, it's just having fun on Twitter. Yuzvendra Chahal is known for that. And of course, Tabrez Shamsi is also having a good time talking to Yuzvendra Chahal. Okay, guys, now it's time for our contest. Let's see what is the question for you. The question is predict the exact first innings total in the match between New Zealand and Afghanistan. और आपको कमेंट करना है हमारा हैशटैग यूज करके बैटब्रेक7 CricTracker को मेंशन कीजिए और बता दीजिए कि आपका स्कोर क्या है और एक लकी विनर को हम चुनेंगे. एंड लेट्स नाउ टेक अ लुक एट द पोल. और पोल में कितने प्रतिशत मिल रहे हैं न्यूजीलैंड को और कितने अफगानिस्तान को. कैन अफगानिस्तान स्टन न्यूजीलैंड? Yes, 71%, and no, 29%. Excuse me. So, you never know, अगर एक और upset आज हमें देखने को मिलता है. Can we see another upset in this match as well, Stuart? Well, I think too with the rain arounds, if it's a shortened contest, it sort of brings everybody back to an even playing field. New Zealand are riding high at the moment with their confidence up after beating Australia. Afghanistan beaten by England in Perth, a little dented. So you would think that, if it's a normal 20-over game, New Zealand hold all the aces up their sleeve. But with the rain-shortened contest, and we've just seen a rain-shortened contest go to the underdog, anything's possible. I think having 79% going for Afghanistan, I think that's a little bit too high, but I can see their thought process. I understand where they're coming from. So, yeah, look, if any team's going to
cause you problems in this group, Afghanistan's the one. Absolutely. Thank you so much, Stuart, for your time. No problem. And we'll see you just after the match, though it's raining right now. But I hope we get to see the full match, and it's not reduced. The overs are not reduced, and Afghanistan and they get to play the full match here. So thank you so much, guys, for watching. अभी के लिए फिलहाल इतना ही. जल्द आपसे मिलते हैं मैच खत्म होने के बाद.